आज हम एक ऐसे विजनरी के साथ बात करने वाले हैं जो यंग हैं और जिनके आइडियाज़ फ्रेश हैं, जिन्होंने इन्वेस्टिंग को लेकर भारतीयों का नज़रिया बदल दिया और ट्रेडिंग को आसान और किफ़ायती बना दिया। हम बात कर रहे हैं नितिन कामत की, ज़ेरोधा के फाउंडर और सीईओ। नितिन की कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की जर्नी नहीं है, बल्कि ये जर्नी है ट्रांसफॉर्मेशन की। नितिन ने बिज़नेस के साथ साथ कम्युनिकेशन की अहमियत को समझा और समझाया, नए भारत की नब्ज़ पकड़ी, ज़ीरो ब्रोकरेज और फिक्स्ड फ़ी के ज़रिए पूरे लैंडस्केप को डिसरप्ट किया। आज हम उनसे जानेंगे कि मार्केट कैसे बदल रहे हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के पैटर्न में क्या बदलाव आए हैं और नए इन्वेस्टर्स के लिए क्या मौके और रिस्क हैं। तो तैयार हो जाइए एक बेहद दिलचस्प और इंस्पायरिंग बातचीत के लिए। नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ओरिजिनल प्लान था कि मैं बेंगलोर आऊँ और आपसे बात करूँ, लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आज हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Yeah, I mean, don't mind, I'll try to speak in English as much as possible. Not a problem. And wherever, I can speak in Hindi, I'll speak. Yeah. No, I mean, pleasure being on the show. So. Absolutely. ज़ीरोधा के बारे में कुछ नंबर्स मैं आपको बताता हूँ। 2020 में वो 13 लाख क्लाइंट्स, FY23 तक 54 लाख पर पहुँच गया और अब ये नंबर 1 करोड़ से ऊपर है। FY24 का रेवेन्यू 9,400 करोड़, प्रॉफिट 5,500 करोड़, जबकि FY23 में रेवेन्यू ही 4,700 करोड़ था। एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी जिसने कोई फंडिंग नहीं जुटाई और एक लैंडस्केप पूरा चेंज कर दिया। नितिन, जो भारतीय बाज़ारों में चेंजेस हुए हैं, यू हैव बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ दैट। आई थिंक सबसे ज़्यादा आपने ही इन चीज़ों को देखा है। वी हैव सीन द ग्रोथ ऑफ ज़ीरोधा, वी हैव सीन द ग्रोथ ऑफ इंडियन मार्केट अलॉन्ग विद दैट। आपके हिसाब से क्या बदला है 2020 के बाद से अब तक? जो हमने ग्रोथ देखी है उसमें क्या मेन फैक्टर्स रहे हैं? I mean, markets में I mean, markets have grown so much that it's what you could have seen in probably 10-15 years. The growth in 10-15 years, it's probably fast forwarded right now. And basically what happened with COVID is people had free time, people had money they were not spending anywhere. And they were kind of finding avenues to invest, do something with the money. And alongside that, you had like the biggest bull market run in the markets as well. All put together, it probably was the biggest, biggest run in terms of participation, in terms of everything in the last 4-5 years. नितिन, एक चीज़ जो आपके साथ मैंने देखी है, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू डू जो लोग पूछते हैं कि शायद आर काउंटर प्रोडक्टिव टू योर बिजनेस, वार्निंग रिटेल, नजेस। कई बार आपने बात कही है कि रिटेल को केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इवन सेबी ने भी काफ़ी स्टेप्स लिए हैं ऑप्शन एक्टिविटी को कर्ब करने के लिए। क्योंकि आपके पास सारा डेटा रहता है, जो F&O में रिटेल के लॉसेस हो रहे हैं, क्या उस पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है सेबी के इन फैसलों का? हैज़ इट कम डाउन और इज स्टिल द फैक्ट कि रिटेल इज स्टिल मेकिंग लॉसेस इन F&O? The thing is, from the last October, the activity in options market is significantly down. So it's come down significantly. And I mean, you have to assume that as and when lesser number of trades, then lesser the losses as well. So I would say it's come down slightly. So both in terms of market activity, market participation, as well as the corresponding losses. Because in the market, the thing is, in F&O especially, or to be more honest, mostly in options, because in futures what we're seeing is half of our clients are making money, half are losing money. In options, it essentially gets skewed.
especially with option buyers, because option buyers are looking at like a really quick way of making money, and that's not really possible in the markets, and that's why so many people lose money in the options market. So yeah, I mean, I would say it is. I mean, coming back to your question, I would say it's significantly lower. The options trading volumes and corresponding option losses as well. Also, क्या डिलीवरी की तरफ थोड़ा ट्रेंड बढ़ा है? हैव यू सीन मोर वॉल्यूम्स मूव टुवर्ड्स द डिलीवरी साइड ऑफ द मार्केट, और वहाँ पर किस तरीके का ट्रेंड रहा है रिटेल के लिए? No, markets, the thing was the last 6 months is probably too short term a trend to call, because the activity was lower, and I mean, given the bear market kind of thing we had running, the activity has been quite low even in the cash market. So not really the right time, to probably we can kind of spot more of a trend in the next 1 year or so. To your mind, नितिन, आगे जाके किस तरीके के ट्रेंड बदल सकते हैं? एक साल जैसे आपने बोला, यहाँ से given the fact कि markets been so dominated by retail flows, what kind of changes do you see in next 1 year? I mean, it depends. See, the thing is, retail activity is kind of like a mirror image of the market, performance as such. So the last 4-5 years, the market's been in a bull run. Hence, the activity has picked up significantly. So this is like the first time that market is kind of subjected to like a bear market of sorts, and so it depends. It depends next 6 months if markets are doing, now that we had a bounce back, if this bounce back continues, then definitely the activity will be back. If it doesn't, then activity will not be there. So it's we are really a high beta company as such, So it is we are we essentially have to figure out the market behavior in this, So. नितिन, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा था. जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी 2003-04 में, स्टॉक मार्केट वाज एसेंशियली अबाउट बिग सिटीज़. मैक्सिमम वॉल्यूम्स वुड कम फ्रॉम मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, सम फ्रॉम कोलकाता एंड दिल्ली. यू हैव ऑल द डेटा नाउ. क्या चेंजेस आपने देखे हैं पिछले 3-4 साल में? इज़ इट बिकम मोर डाइवर्स नाउ, मोर स्मॉलर सिटीज़ पार्टिसिपेटिंग, or is it still lion's share with Mumbai, Ahmedabad and rest with others? क्या आपने changes देखे हैं? No, I mean, the thing is, if you look at the customers by address proofs, then it's definitely diversified. Address proof in the sense, say Aadhaar pe, whatever is updated as address, then you can see that customers are all across the country. But if you were to see it based on login IPs, I mean, essentially from where the trading activity is taking place, then that seems more concentrated, So, but still, it's still, diversified significantly from back in 2016-17, but not as much as the data suggests, So. Absolutely. अच्छा,